Uh, Next topic, being Vaishnava. Right. What exactly it means by being a Vaishnava? Right. We heard a lot of we are Vaishnava, we are this, we are that. I don't know where's my cursor now. Got it. Let me know when it is visible. Okay. So today we'll discuss being a Vaishnava. Small things, not much. And general etiquettes, what we do. We just saw when Prabhuji was going, what he did. Right. He did a pranam. So a lot of question comes into my why we do this. When the class was started, Prabhuji put this mala, right, the garland. Right. Why do we do this? So there was a session actually before. Most of you were there. Few of you were there about Vaishnava Sadachar. So I'll take a few of things that we did in the temple. We'll do that again someday, right? But this time we'll just have a glimpse of it, along with some other Vaishnava etiquette. So what do we mean by being a Vaishnava? So what is a Vaishnava? Simple definition. Those who worship Vishnu, right? And any Vishnu avatar, they are called Vaishnava. Right? A simple definition. So, but this is very important line that one should always remember that one is a devotee and representing Guru and Krishna. Very important. This one we said, एक होता है गांठ मार के रख लो, right? Just keep cast in stone in mind. Always think about it, because think of a way, think of a situation. I'm here giving lecture to you all, and after the class, you see me. अरे प्रभु जी तो पान की दुकान पे खड़े होके. What would you think? Whatever I say, would you ever follow? Would you follow whatever I say? Or you come to know a guru, right, who gives all the great katha and lecture and that, and behind the curtain or behind his satsang hall, he just orders or he gets बढ़िया अच्छा खासा chicken curry, take बढ़िया payasam, and then he eats that. What would you like to actually, or would people like to follow such kind of guru? No, right? So it's not just about guru; it's about us also. If we are Vaishnava, whatever acharan we do in life, in front of the society, that is very closely monitored by people, right? If we say wrong word, if we say abusive words outside, people will say, क्या तुम सीख रहे हो? पहला क्वेश्चन ये होगा, तुम क्या भगवत गीता क्लास जाते हो when you do these kind of things? The first question or the first comment will be that only. क्या फायदा है तुम्हारे जाने का? क्या सीख रहे हो तुम? Right. So we should always remember that being a devotee, we are representing our Guru and Krishna. Why Krishna? Because you see, this person is a devotee, the last person, right? He is gaining the knowledge from Guru. Whatever he will show, whatever he will preach, that is coming from a Guru. And the Guru is getting the knowledge from Krishna ultimately. Right? So we are representing Guru and Krishna. Now, how we should behave in public? Or what should be a top most qualities of Vaishnava? We'll take a few qualities of it. First thing, being humble, being kind, and being respectful. We have to always remember these things. These three things are topmost qualities of a Vaishnava. Being humble. So when Prabhuji did that, right? So what did it represent? When he went out, he just did a pranam and then he went out. What did it represent from? Being respectful, right? And do we need to be respectful to only Guru and fight with other devotees? To everyone. And to everyone means to every soul. These all things should be done for every soul. Being humble, being kind, and being respectful, not to only your seniors, but also to your colleague to nahi kahenge, your fellow devotees, right? And with every soul. If you are going on the way, right? If you are going on the way, there could be conditions where you have to distressful condition, right? Road rage, you just had a fight, someone is shouting. You can be humble. You can be respectful to them. One time, two times they will fight. So once I was driving a car, coming from a temple. So that was a slope, and because the car,
if someone has gone to this subway, passway towards BHEL side from Telapur, they know that's a very narrow passway. At one time, only one car can come. So I went ahead and then I saw that after taking a turn, one car is coming. So I stopped there and I thought it will take more space, so I went back. And just behind me, there was one car. So I thought that I am stopped there. So once that car passed, that time I thought that I'll go back a little bit. I reversed back, and that car got stood up just beside my car, behind my car. So when that car passed, so I thought I'll go ahead. I forgot that I put my car in reverse. So it was not going ahead. I don't know why it is not going ahead, right? So I put a little accelerator, so it went behind very slowly, and it just touched that other person's car. Right? I'm like, okay, क्यों नहीं हो रहा है? And then still I did not realize कि क्यों नहीं हो रहा है और accelerator बढ़ाया. ठीक है, थोड़ा और पीछे गया. कुछ हुआ नहीं उसकी कार को. But then that person came down charging, and he saw me. ठीक, he saw me wearing tilak, wearing this. He said, देख के चलाए करके आपके बच्चे बैठे तो क्या होगा? मतलब that's how he came. He was like एकदम fighting mood में है. Then he saw me. Okay, ठीक है. Then फिर कि थोड़ा देख के चलाया करो. तो उसने ये बोला कि जब कार चलाना सीख लेना तब आप सड़क पे आना. ऐसा नहीं बेटा. I said yes, true. 4-5 साल और लगेंगे. But that, I could have, मतलब he could have fought simply. But what he chose to do? He just chose to do being humble. We could be the same thing. If someone is shouting, you will take a very humble position. After 1 or 2 sentences, they will become humble. They themselves realize I am doing bad thing. Okay, let's not do that. So there's a purport from Srila Prabhupada. A Krishna conscious person thinks always about himself as the lowest creature in the world. And the more one thinks like that, he becomes elevated more and more. A Krishna conscious person is never falsely puffed up. He is satisfied with his humble position as the servant of the servant of the servant of Krishna. Very important. That's a very different thing from material position and spiritual position. In material position, we always think we are superior. Right? And that's how we grow. I will showcase that I have this much skill. Right? I am that much important for my project or for my company, and that's only will grow. In spiritual position, that's exactly opposite. The more I will showcase I am lowest of the creature. And when we say creature, it's not lowest of the humans, lowest of the creature. I'm even lower than a dog, I'm even lower than a cat. Right? The more we grow. एक जगह है लखनऊ में इमाम बाड़ा. कोई गया वहाँ? बड़ा इमाम बाड़ा. उसमें एक वो है कि सीढ़ी से आप नीचे जाओगे तो ऊपर पहुंचोगे, ऊपर जाओगे तो आप नीचे पहुंचोगे. ठीक. That's how it works actually. It is made like that. If you climb up the stairs, right, you will reach down, deep into that Imam Bada. And you will climb down the stairs, you will reach actually outside, up on that. That's how our spirituality is. So, we should always think we are lowest of creature, right? And that's why, like, when you see, a lot of time you would have seen that. When we come into some Vaishnava there, it is prescribed that we should give a pranam to them. Like we said, Panchanga, right? That because of their mercy only we are here. If it was not about their mercy, we would not be sitting here and getting this knowledge. Right? That's why we always offer our obeisances to those Vaishnava. And being humble is one very important point. We always need to remember that. Then next, any question you can ask in between. A lot. Yeah, like you said about that fighting thing. So in that case, your case, that guy became humble. So like it was. But many scenarios we'll face where the opposite person does not listen and he just wants to fight. Like there is no escape from it. So that time, what is the practical thing? I mean, how can we be humble or we not fight that time? See, a lot of time we don't even wait for other person to become humble. If you realize that. Yeah. If he start one time, we'll say, and next time we'll start shouting even with a louder voice than him. We don't have patience to become. But in case something extreme cases, the guy is like Rakshas, right? He is not going to become humble. You leave that place. The better way is to leave that place because it does not serve any good to fight with them. You don't know what will happen, right?
or either you have an army with you. But it does not matter, right? Better to leave that place, nothing will happen. But most of 99% of the time that does not be the case. It gets solved. A lot of time people get this into car. Mostly this thing we see in the car, like car road race and all, right? Simply say, okay, this is my insurance number. You go use that. You do that. That person will immediately become humble. There is a solution. We pay for that, right? 15,000, 20,000 we pay for. What is the use? So you can do that. A lot of things. Then being kind. Kindness matters. And we will be appreciated by how much we give it, not by how much we know. Not by theory, but by practical. Like we discussed कि एक person था बहुत knowledge है. I know a person who said I read Ramayana 100 times. But he is not preaching that knowledge, he is not telling that to the world. Then what's the use? He will die, the knowledge will become zero for the world. Right? He will have it. He has read it spiritually, he may have the good things for that. But then what is the use for the world for his knowledge? So the kindness is appreciated when it is not only knowing, not only gained, but it is also when it is given. Our culture is for the giving, it is not for the taking. The whole Sanatan culture is for the giving. आप देखिए मतलब कोई भी एग्जांपल लीजिए पहले राजाओं के कोई बड़े फंक्शन होते थे what they used to do leave raja they used to do दान leave raja even normal प्रजा also अगर उनके कोई भी फंक्शन होते थे they used to do charity अभी हम क्या करते हैं गिफ्ट्स लेते हैं now the culture has become opposite we come from spiritual to material platform that's where we have become right हम अब सोचते हैं कि कितना बड़ा हमें गिफ्ट मिल जाए ठीक अगर कोई आपका बर्थडे है ठीक है किसी ने 200 का गिफ्ट दे दिया then immediately we start judging अरे यार क्या चिंदी आदमी था ठीक है इतना सस्ता गिफ्ट दिया we do that right and that's very natural everyone would have done that but all of us would have done that because that's what we have become we have forgotten what is the meaning of being kind what is the meaning of being humble so you can read this. So the teaching and Vedic translation of Srila Prabhupada are impressive and attractive. But what is more prominent about him is that capture our faith in what he said. It is not just his words or great intelligence, impressive as they were, but who he was as a person. His kindness, compassion, and genuine concern for us. His human kindness made his spirituality accessible and tangible, as this is universally appreciated. We could feel that he cared about and loved us and all the time in the world to answer our questions or help us deal with the pressing issues or even mundane concerns. When people came to visit him, he was never annoyed, distracted, or looking at his watch. He was fully present, put us at ease. He was encouraging, that disarmed us, opened our heart, and helped us accept Krishna consciousness, even the parts we couldn't fathom. Right? The kindness was the face of bhakti and captured our dedication. So one Maharaj said this line for Srila Prabhupada. Why we say that you cannot learn spirituality from YouTube? If you are not sitting in the class, it's impossible. Because you cannot experience these practical things. How can you ask that question from the YouTube person? There was a Prabhuji who said by asking the comment. I said you write a comment and you get the answer and next 1 year you come to me. No one even replies to the comment. When there are 1,000 comments, this is not practically possible. Right? So that's where it's like Srila Prabhupada. We have to become like Srila Prabhupada. He was very kind. There was instances like a lot of stories are there. Like if the devotees are coming from outside at night, 3 o'clock, 4 o'clock, he will be awake. Even though he has to wake at 2 o'clock in the night. He will be awake to the late night or the whole night just to wait for them. There are like the kitchens. We would have seen the stories about Mahakumbh में ISKCON का kitchen लगा था. Garland Prabhu and lot of devotees are there who were running that kitchen. They were awake the whole night just to make sure these things are working fine. They are accessible to everyone, to listen to everyone. That's how we should be, kind. Not like someone thinking like I'm superior because I'm sitting on this Vyasasana, I'm superior. No. Then that is 100% sure, more than 100% I will fall in my bhakti. Right? This is written in Shastra. The moment we get the
pride and ego, that's a certainty that we will fall in bhakti. And the moment we become more humble and humble, we think that's where it was written, servant of the servant of the servant. That is the advancement of the bhakti. Right. Then being respectful. Materialistic society teaches us to be aggressive and calculating, like we discussed. Right. So we can push our own way through. But in Vaishnava culture, it's opposite. We offer respect. The reason, when you give respect without expecting anything in return, you open yourself to the power of divine blessings. When you give respect, right, the driving force of a spiritual society is the power of blessings from the Vaishnava and mercy from Krishna. Krishna directly mercy nahi denge. They always give us mercy through the Vaishnava. So that's where it's very, very important, very, very important point to be respectful. Like if I talk about that Mataji, I have to be respectful. Maybe she is experiencing that. I may not be able to comprehend that. Right. But then I am no one to judge her for her action. Right. I took her example just to give you one example how this may not be experienced by everyone. And that may not be correct thing. But yes, we don't know what she is going through, what she is experiencing by this. So it is better to take humble position and show respect than to take a superior position and demand respect. We say that respect has to be earned. You cannot demand respect. But that's a normal daily kahavat bhi hai. Respect has to be earned, not demanded. So that's what it is. The moment you are respectful, you open yourself. You respectful to others. You open yourself up to blessings. My dear devotees, if you want to move forward in your life, you should know that art of giving respect to elders. If you do this, you gain a mystical support that ensures all your undertakings are successful. Right. So, any questions? Then we'll go to the general things. Hamata. हम किसी से जब बात करते डे टू डे लाइफ में या किसी अननोन से मिल रहे हैं ऑफिस में कहीं पे भी, तो सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी बात में. हाँ. एंड एज मतलब हम मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञानी है हमें सब पता है, बट जितना समझा है तो when we think you know what he is saying is not correct, and then we start arguing कि अच्छा आप गलत हो. उस केस में then they start saying अरे why you are judging, you should respect my point of view also. But we know that as per Shastra, as per Dhamma, this is not right. But they are not listening. करेक्ट माता जी. तो देखिए कभी हम 10 ऑफेंसेस भी डिस्कस करेंगे, देन विल डिस्कस लिटिल मोर अबाउट दिस. बट कई बार होता है ना कि हमारी टोन भी ऐसे, स्पेशली मेरे साथ ही होता है. इवन इफ आई एम डूइंग ए डिबेट विद समवन, मेरी टोन ऐसी हो जाती है, पीपल विल थिंक कि आई एम फाइटिंग विद देम. बहुत बार मेरे साथ तो बहुत है. मेरी मम्मी हर बार बोलती है कि बेटा तुम जाके बहस मत करना. That's our always instruction when I go out of home. That is the permanent instruction written in cast in stone. बहस तुम मत करना, ठीक? क्योंकि तुम बहस करते हो मतलब लड़ाई करते हो. क्योंकि मेरी टोन ही ऐसी हो जाती है. तो एग्जैक्टली बात है जी. तो कई बार ऐसा होता है. Then we have to actually correct ourselves, ठीक? And जहाँ तक ये आर्गुमेंट की बात है, पुराने जमाने में शास्त्रार्थ होते थे. That शास्त्रार्थ में सभी अपने आर्गुमेंट रखते थे, but that was always and always being respectful. They always put not like आज तक की डिबेट की तरह कि दूसरे को तो बात ही नहीं करने देना, ठीक? I have to shout and as loud as I shout, I am. आजकल यही है ना, the more you shout, the more you are correct, right? आप उनको बोलने तो दीजिए, कभी तो चुप होंगे. अरे ऐसा नहीं होगा माता जी, नहीं होंगे तो फिर आप चले जाएंगे, वो बोलते रहेंगे फिर. माता जी देखिए वो मतलब आपने कुछ किया तो उनको रियलाइज हुआ ना, तो उनको रियलाइज कराना है, चिल्ला के नहीं. आपके चिल्लाने से वो रियलाइज नहीं करेंगे माता जी. आप देखिएगा आपके चिल्लाने से नहीं करेंगे, लेकिन आप प्यार से बोलेंगे तो वो दे विल सर्टेनली रियलाइज. अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू अगर रेस्टोरेंट का है तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. रेस्टोरेंट में ठीक है आप प्यार से बोलोगे तो भी सुन सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. बहुत सारे लोग होते हैं जो प्यार से भी सुन सकते हैं,
ठीक, बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे, आप एक काम करिए, आप जाकर उनके बगल में बोलिए भैया आपको 5 बार मैंने बोल दिया, एक बार आके करो, आप देखो नेक्स्ट टाइम वो करेगा कि नहीं। ठीक, हम भी तो अपना कंफर्ट ढूंढते हैं ना कि हम क्यों उठे इस सीट पे। वी आर पेइंग फॉर दिस, आवर प्राइड कम्स इनटू पिक्चर, बिकॉज वी आर पेइंग वी डिमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। नहीं माता जी, यही तो बीइंग हम्बल से हम निकल गए ना, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग देम एज इंफीरियर टू अस, दैट्स व्हाई वी आर डिमांडिंग, वी आर थिंकिंग दैट आवर क्लास इज बिगर देन देम, दैट देयर कम्स द प्राइड। जैसे मैं अपना क्लिनिक चलाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कोई पेशेंट आएगा तो मेरी ड्यूटी है कि उन्हें हर तरह का कंफर्ट होना चाहिए, उनको रिलैक्स होना चाहिए, वो वहाँ से सेटिस्फाइड हो। अच्छा, आप अपने क्लिनिक में मान लीजिए आपके एक वो, आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड कंपाउंडर हियर और नॉट, यूपी में कंपाउंडर बोलते हैं, आपका एक कंपाउंडर है, राइट, आपने एक कंपाउंडर रखा 15 दिन के लिए, वो क्या करता है, अरे ऐसे मत बैठो, अरे ऐसे मत बैठो, ये क्या कर रहे हो, हल्ला कर रहे हो, मोबाइल तेज कर रहे हो, ठीक, 15 दिन के लिए उससे रखा, वर्सेज आपने दूसरा कंपाउंडर 15 दिन के लिए रखा, वो कहता है कि भैया थोड़ा सा इसको कम कर दीजिए, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। आप कौन से कंपाउंडर को रखना चाहोगे? तो जब आप ऐसे कंपाउंडर को रखना चाहते हो जो अच्छे से बोल रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं बिहेव कर सकते? एग्जैक्टली, हाँ, अब जैसे आप कहीं और गए, आप वहाँ पर भी ये चाहोगे कि आपको वहाँ पे सारी चीजें humble, kind, peaceful मिले, because आप भी वहाँ पे अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, तो अगर जब आपको वो नहीं मिलेगा तो आप उसको पीसफुल कंप्लेंट भी करोगे कि यार ये गलत है, ये हो रहा है, और सामने वाला was like not interested to listen you, तो उस समय पे तो आपको थोड़ा तो आप वो होगे तभी देखना पड़ेगी ना, वो सुनते हैं। हाँ माता जी, मतलब आप उससे डिस्ट्रेस होगे, ये करोगे, ठीक, नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे? विल यू विजिट दैट होटल अगेन? नो, दैट्स अ लेसन यू विल लर्न एंड यू लीव। एक टाइम, कई बार ऐसा होता है, कई बार आप ठगे जाते हो कहीं जगह, दोबारा आप विजिट नहीं करते हो, यू लर्न योर लेसन, यू लीव, दैट्स अ वेरी सिंपल एज इज, यू डोंट हैव टू फाइट। आपके चिल्लाने से भी हो सकता है बंदा ना सुने, उसके ऊपर रोज 50 लोग चिल्ला के जाते होंगे। ऐसा भी होता है जैसे कि मान लो वहाँ का स्टाफ खराब है बट वहाँ का हेड अच्छा है, तो यदि आपने गुस्सा नहीं करा या कंप्लेंट रेज ही नहीं करी तो उसके हेड को कैसे पता? आप हेड को जाके बताइए फिर। हम जनरली तो यही करते हैं ना, अगर टीममेट नहीं सुनता तो उसके मैनेजर को बताते हैं ना कि ऐसा कर रहा है, हम उसके ऊपर चिल्लाना तो शुरू करते नहीं, ऑफिस में चिल्लाना तो हम कभी नहीं करते। तो व्हाई कांट वी टेक द सेम पोजीशन आउटसाइड आल्सो? क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना माता जी, क्योंकि हम क्लास पे पहुंच जाते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग, बिकॉज वी आर सुपीरियर, हमारा थोड़ा सा ईगो वहां पे आ जाता है, इसलिए। वरना जो काम आप ऑफिस से करते हैं आप बाहर भी वही काम करेंगे। आप अगर वो नहीं सुन रहा है तो क्या करोगे आप? यू कैन सिंपली लीव, ठीक, आप कहोगे ठीक है काम करो, आई एम नॉट कमिंग टू योर होटल अगेन, आई एम लीविंग, छोड़ के चले जाओ, खत्म, क्या होगा? इट्स हिज लॉस, नॉट योर लॉस रियली। उसका बिजनेस जाएगा और 10 लोग को आप बताओगे, उसका लॉस जाएगा। तो इट इज हिज प्रॉब्लम कि वो अगर हम्बल नहीं है, वो नहीं सुन रहा है, तो क्या होगा? वो आपका लॉस नहीं होगा। बट अगर आप वहां एजिटेट होकर लड़ाई करोगे, यू आर नॉट बीइंग हम्बल। देखिए, शाउटिंग इज अ डिफरेंट थिंग, तेज आवाज करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट देन देयर इज अ नेक्स्ट स्टेज, देयर इज अ थिन लाइन। आप कहां तक आप शाउट कर रहे हो या तेज बोल रहे हो ताकि वो सुन ले, और आप कहां पे फाइट करना शुरू कर रहे हो? देयर इज अ लाइन इन बिटवीन, राइट? बीइंग अ लिटिल लाउडर एंड बीइंग एग्रेसिव। आपको वो लाइन सब आदमी के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर। कई बार चिल्लाना पड़ता ही है, कई बार डिवोटी लाइन में नहीं जा रहा, नहीं मान रहे, तो लोग भी चिल्लाते हैं ना, जो क्राउड केयर करते हैं लोग चिल्लाते हैं, अरे अंदर जाइए, तो इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, दैट्स अ हायर पर्पस। वहां पे उस श्रेयस के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि केवल एक डिवोटी की वहां पे कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां 100 और डिवोटी भी है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन यू कैन डू, बट एट मोस्ट वी शुड ट्राई टू टेक respectful and humble position जहां तक possible है, rather than being directly becoming aggressive or चिल्लाना शुरू with pride and all thing. That's what we should try, right? But again, situation to situation. So इस पिक्चर को देख के आपको क्या दिख रहा है? दो डिवोटी मिले, एक लोग कह रहे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। क्या आपको दिखा इसमें? कुछ something which is striked out to you? क्या हो रहा है? Being respectful, हाँ, that's true. Greeting themselves with
हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम. Revert back to Prabhu. तो a lot of time मतलब आपने कभी सुना है ये लोग क्यों दंडवत प्रणाम बोलते रहते हैं हमेशा? ये बोलने से क्या होता है? कभी सोचा है कि नहीं? मतलब मैंने तो सोचा था before I came here. Right. So why do we say दंडवत प्रणाम? Just words? Because it's a बोलने से थोड़ा जैसे आप बोलते हो तो थोड़ा इम्पैक्ट आता है अंदर चेंज सपोज तो इमीडिएट ना है बट स्लोली दैट हैबिट यू स्टार्ट हाँ correct. So we are respecting this. We are saying Dandavad Pranam with respectful manner, and that is making us humble. एक बार में नहीं होगा ये, ठीक. But slowly and slowly we are going to become humble if we say that. That is the way it would work. So a lot of people asking why do you say Dandavad Pranam? मतलब सबको Dandavad Pranam करते फिरते हो क्या है ये? मतलब what is this thing? Because that is what makes us humble. And जो यहाँ पे था ना, we think that we are the lowest of the creature. So when we say Prabhu ji and Mata ji, has anyone thought why we say Prabhu ji and Mata ji? To give respect. To give respect, yes. But then why Prabhu ji? Someone asked me, आप प्रभु कैसे कह सकते हो? आप उनको भगवान बना रहे हो? No, it's not भगवान. It is like I am lower than you. When you say Mata ji, you always say we are always lower than our mother, right? And we give respect to our mother, right? So that is the reason we say Prabhu ji and Mata ji. That when we say Prabhu ji, that means you are superior to me. So to anyone you say Prabhu ji, that I am below you. I am subordinate. मतलब my position is below your position. You are superior to me. That's why we say Prabhu ji and Mata ji. Small things, but a lot of time question comes. So theory is over. We'll just discuss the practical things. Right. So how we can greet as of being a Vaishnava? You can say Hare Krishna. Why? You can say hello also, but then what it will give you? Nothing, right? But when you say Hare Krishna, कम से कम आप भगवान का 2 बार नाम ले रहे हो. Hare means Radha, Krishna, Krishna. Right? At least 2 times. 2 पाप कट गए. ठीक. And you are propagating our good culture also, taking God's name. पहले के लोग बोलते थे राम राम भाई. ठीक है. आप जाओगे वृंदावन, आप देखोगे सब राधे राधे ही बोलेंगे. ठीक. No one will say hello, hi. और भाई क्या हालचाल. ठीक. वहाँ तो अगर रिक्शा वाला भी कहीं किसी को बोलना होता है राधे राधे ठीक से चलो भैया, या उसको रोकना अरे क्या कर रहे हो, अरे वो बोलेगा नहीं, राधे ही बोलेगा वो दिल से राधे. तो that's what it is. And Dandavad Pranam to keep us humble. Right. Then Vaishnava home is a temple. I don't know, the people came, जैसे माता जी अंदर है, प्रभु जी के माता जी से came, right. They were the first one to come. So when we go into any Vaishnava home, okay, if there is a temple, what we should try to do, we should try to have a darshan and pay our obeisances to the deity. Because a Vaishnava home is a temple. Right. It's not कि temple ही temple होता है. एक सीरियल आता था घर एक मंदिर, किसी ने देखा? ये किसी ने सुना है? आपने सुना है, माता जी ने नहीं सुना है, उनको दिखाएगा बच्चा. ठीक, मेरी मम्मी देखती थी. ठीक है. तो घर एक मंदिर वो बोला तो it was not about the serial, but घर एक मंदिर because at your home when there is a deity residing, that home is a temple, right? And when you go to the temple, what you do? You pay your respect to the God. So whenever we enter, like say next time you go to Mangalacharan, next time in your class, just try to go have a darshan of Bhagwan. You pay your obeisance. अगर जगह नहीं है तो आप खड़े खड़े कर लीजिए. If there is a place you can do the Dandavad Pranam, Panchanga Pranam. Now how to do? This is the way to do. A male, they have to do the Astanga Pranam, right? जो आपको दिख रहा है पहले. और ये घर का मंदिर ही है by the way. That's why shutter stock दिख रहा होगा because I did not find any other picture any other place. So I just put. How does it matter for us? So yes. So the Prabhuji is doing the Astanga Pranam and Mata is doing Panchanga Pranam for the same deity. So that's what prescribed in the scripture, that a Prabhuji has to do Astanga Pranam. What is Astanga? Astanga, feet, knees, chest, hand, head, sight, mind and words. These are not the direct ang, right? But this is very important to know. It is not like we are just doing the ritual, बस गिर गए प्रणाम किए उठ गए. No. Sight, मतलब हमारे जो दृष्टि है, अगर हम देख रहे हैं तो वो भी हमारी
अगर डीटी की हो रहा है तो डीटी को देख के होनी चाहिए, अगर नीचे है तो नीचे देखे, ठीक ठीक। माइंड मतलब दिमाग में भी कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं चली जाए, बट बिकॉज वी आर डूइंग द प्रणाम, बिकॉज वी आर पेइंग रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट वी हैव टू थिंक कि वी आर डूइंग द रिस्पेक्ट टू गॉड, वी आर डूइंग प्रणाम टू गॉड, सो वी हैव टू थिंक अबाउट गॉड ओनली। इट्स नॉट लाइक कि कर रहे हैं प्रणाम, सोच रहे हैं कोई मूवी कौन सी छावा के बारे में, ठीक नहीं। अगर आप जो कर रहे हो वो सोचे, मन भाव, वही कहते हैं ना, मन से भाव से, राइट। एंड देन वर्ड्स, देयर इज अ प्रणति मंत्रा, समडे विल टेक pranati mantra. Today's class we missed to do all the pranati mantra. Okay, so that pranati mantra we say. So mind, words, and sight also along with this. So Sastang pranam is prescribed only for male devotees. Take male. For women, even though this is a Prabhuji, right? But for women, it is only this Panchang pranam, right? Because in our shastras, it is prescribed that the belly and the vakshasthal, that should not touch the ground. It is very pure. It is considered very pure, right? And there are scientific reasons also, because pregnant women should not actually, their belly should not touch, right? But yes, they should do always Panchang pranam, right? So they can do this way always. चाहे आप भगवान को कर रहे हैं, चाहे आप गुरु को कर रहे हैं, चाहे वैष्णव को कर रहे हैं. Women should only do Panchang pranam, male should do as much as possible this Sastang pranam, right, to the deity. But when they are meeting a Vaishnava, they can do Panchang pranam. And sometimes there are very less space in temple, lot of crowd are there. It's not possible to do Panchang pranam, right? Sastang pranam. Then you can do Panchang. Even if that is not possible, then you can do mental pranam also, right? Yes, it is prescribed. Because it's not possible, you can do that also, but only in those conditions. So when you enter to home, anyone home which is there's a temple which is open, you should do these practices, right? And perform Panchang pranam whenever feasible to the other Vaishnava also. So when Prabhuji went, he did a Panchang pranam. So he did as a Vyasasana. I'm sitting here on the Vyasasana, so as a Shiksha Guru, as a speaker, he did pranam to me, right? But yes, when you meet Vaishnava, you can also do this thing. If possible, you can do this. Or if it is not possible, you can simply say Hare Krishna or messages, right? Then how to walk past among other devotees. Small thing just to remember. It's not like, Are hato, right? पहली चीज ही क्या हो जाएगी, being respectful. ठीक? So what you can do, you can simply ask Prabhuji, या हरि बोल Prabhuji. They themselves will know कि क्या है, और हरे कृष्ण माता जी, they will know, right? You can simply ask कि just to give you a way, so that your body parts should not touch, or your legs should not touch their body. We discussed that in one of the Bhimsen's story, Kapitwaja, right? You should not cross one's body, because in every body Paramatma lives, and you cannot touch Paramatma with your leg, right? So that's why it's best to be avoided. Then why did this garland was offered to me? This is more than the respect actually. Respect आप बिना garland के भी कर सकते हैं. So the speaker who is sitting on this Vyasasana, right? This is called Vyasasana, right? Wherever we are sitting, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे दरी भी हो, चाहे चटाई, ठीक? This is called Vyasasana, मतलब the position of a speaker. And a Vyasasana, the speaker represents Guru and in the end Vyasdev. So this mala which is offered, this is not to me. This is to the Guru. This is to the Srila Prabhupada. This is to the Vyasdev. And that's how a speaker should also think. It is not to me which is offered. You can see here this is being offered to Srila Prabhupada also, right? So what Srila Prabhupada, this is purport from it. Personally, I have no credit for myself, but I am trying to act as a faithful servant of my predecessor and just presenting without any adulteration of the message which I have received from my spiritual master. Very important thing, right? I cannot put my own things there, my mental concoction or my mental speculation I cannot put if I am passing the message. I have to put only whatever been passed by my Guru. And that's why it's called Guru Sisya Parampara.
नहीं तो अपने मन से तो कोई कुछ भी बोल सकता है. So similarly, if this message is presented by you all who have accepted me as your spiritual master, then all the people of the world may be benefited by receiving this transcendental message of Krishna consciousness. Try to execute this mission wholeheartedly and faithfully, and all of you try to broadcast the message to your best capacity. The important thing line was, because the person who is sitting on the Vyasasana, they don't take any credit. They should not take any credit. Because they are just passing the word. हम तो क्या, we are just imitators. We just जो दूसरे ने बोला हमने बोल दिया. ठीक, nothing more. We are not even qualified to sit here. But we are sitting here only because of mercy of the Vaishnava and Guru and Gauranga. Right. So this is offered not to us, not to me, but it is offered to the Guru. Right. So what they have to do, if it is offered, we'll smell it, offer our mental respect to the Guru and Krishna, and just. But keep wearing or put aside, whatever one is comfortable with. Right. Any other question? That's it. That's all. कोई question? छोटी छोटी चीजें. Just but we should know कि how to behave in a Vaishnava culture. जैसे आप जाते हैं मंगल आरती के लिए तो कैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं. ठीक, तो we should know कि why they are doing this. ठीक, why, what is the purpose of it. Nothing. जैसे आप प्रयास आसन पे बैठे हुए हैं, तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए जो आप बोल रहे हो तो बोलते हैं, या आपका दिमाग में थोड़ा बहुत जैसे कोई जा रहा है इधर उधर या कुछ कुछ हो रहा है थोड़ा सा? आप मेरे लिए पूछ रहे हैं, अपने लिए पूछ रहे हैं? मेरा दिमाग इधर उधर जा नहीं सकता क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ. ठीक, अगर मैं ना बोलूँ, मैं चुप होकर बैठूँ तो मेरा दिमाग इधर उधर जाएगा. बिकॉज आई एम कंसंट्रेटेड ऑन स्पीकिंग कंटिन्यूअसली, सो इट विल नॉट गो. आप भी जब कोई प्रेजेंटेशन देते हो ऑफिस में, योर माइंड डज नॉट गो हियर एंड देयर एक्चुअली. राइट, बट वहीं पे आप वो सामने बैठ के सुन रहे होते तब आपका दिमाग कहीं भी जाता है. तो आपके लिए दैट मे हैपन, बट मेरे लिए दैट शुड नॉट हैपन. क्योंकि अगर होगा तो आई कैन नॉट लाइक स्पीक व्हाट आई हैव टू स्पीक. सो प्रॉब्लम भगवान ने ऐसा बनाया ही है कि हम सभी को, कि जब हम बोलेंगे तो हमारा दिमाग इधर उधर नहीं जाएगा. विल बी जस्ट माइंड में वही चलेगा जो बोलना है, आगे का पीछे का जो. तो yes, that's how it is. But as an audience also we should try to be as attentive as possible. वरना फोन तो सबके पास है, बट वो उसके बाद 2 घंटे के बाद भी हम फोन ओपन कर सकते हैं. माता जी आपके लिए नहीं था. All right. Any other question? हाँ प्रभु. being accessible जो होता है, Being accessible. हाँ. वो कितना important है? प्रभु जी सबसे important है. This is the most important. So we are discussing कि why we cannot learn spiritual from YouTube, right, or from other. Because if you are not accessible to people, as a counselor, as a Shiksha Guru, you are not accessible to the people. If they have some problem, they have doubt, how you are going to solve it. And our whole Sanatan Dharma is based on guide करने पे. The whole parampara is not just passing the knowledge, but guiding them on the right path. Right. So हम हमेशा क्यों कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आए, रीच आउट टू द सुपीरियर पर्सन, टू द हायर अथॉरिटी टू फाइंड आउट व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन. इफ यू आर नॉट एक्सेसिबल देन दैट विल नॉट हैपन. राइट. अगर कोई मैनेजर, लेट्स टेक इन मटेरियल वे, व्हिच काइंड ऑफ मैनेजर डू वी लाइक? मैनेजर 1 जिसको आप पिंग करते रहते हो दिन भर, 2 दिन बाद रिप्लाई आता है या आता ही नहीं है. और मैनेजर 2, यू पिंग within, he may be busy but within half an hour he replies always. Which kind of manager do you like? Right. That's what we experience in our normal life also. और हम ऐसे कहते हैं यार वो मैनेजर बहुत अच्छा है, मैं कभी पिक करता हूँ, रिप्लाई तो जरूर करता है वो, ठीक है, बताता है. That is what being accessible is. So that's one of the very important point. I will not say most, but it is very important. And in a parampara, it's a highly important point. तभी गुरुकुल में बच्चे केवल पढ़ने नहीं जाते थे, उनको शिक्षा तो मिलती थी. बच्चे वहां पे रह के वो अपनी जिंदगी, मतलब दे यूज्ड टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ. द मास्टर यूज्ड टू करेक्ट देयर ऑल द वेज, हाउ टू लिव, हाउ टू रीड, हाउ टू डू ऑल द थिंग्स. सो ऑल काइंड ऑफ ज्ञान वाज गिवन. सो दैट्स वेयर बीइंग एक्सेसिबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनी अदर क्वेश्चन? यस माता. हम जैसे कोई है कि वो सारे रिचुअल्स फॉलो करें, कि रेस्पेक्ट करना, बीइंग हम्बल, चैरिटी करना, एंड
मतलब क्योंकि दुख का करने कारण को तो सब आपके अच्छा कर्म ही है, ठीक है, आप करिए ना करिए, दुख अगर आपको है तो आपका कर्म ही उसका ऐसे कारण है। मन में आता है कि मतलब मैं सारा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं कि भक्ति करना, रेस्पेक्ट, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, या जो हाँ, समथिंग इज alright. नॉट राइट। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमें इमीडिएट उसका बेनिफिट मिलेगा, और मे बी नेक्स्ट 1 year 2 year 3 year विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट, क्योंकि अगेन वी आर थिंकिंग ऑन द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। हम सोचते हैं इस लाइफ में बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कर्म ऐसे नहीं होते हैं। आपके कर्म, वाई डज अ पर्सन गेट्स अ बॉडी, अगली बॉडी, ब्यूटीफुल बॉडी, ठीक है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है, कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है, दीज आर नॉट समथिंग विच वी डिसाइड, राइट। वी कैन डिसाइड हमें बीटेक करना है कि एमटेक करना है, वी कैन डिसाइड कि इस लड़की से शादी करनी है, उस लड़की से शादी करनी है, बट वी कैन नॉट डिसाइड हमारा चेहरा कैसा हो, वी कैन नॉट डिसाइड हमारी हाइट कैसी हो, वी कैन नॉट डिसाइड आवर आई कलर कैसा हो। ये सब चीजें कैसे होती है? दीज आर बेस्ड ऑन कर्मा, एंड वो कर्मों का फल आपके कई जन्मों का होता है। इट्स अ एक्यूमुलेशन फ्रॉम मेनी मेनी लाइफ्स। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो आपने अभी स्पिरिचुअलिटी मतलब करना शुरू किया, आप सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो इस जन्म में ही आपको मिल ही जाएगा। मिल सकता है बट नहीं भी मिल सकता है, बट देन दूसरों की लाइफ देखती हूँ और आई सी कि वो सब कुछ करते हैं, मतलब सब कुछ एज पर स्पिरिचुअलिटी और सब कुछ करते हैं, बट फिर भी बहुत दुख है उनको। थोड़ा डेप्थ में हम जाएंगे माता जी, थोड़ा अगर हम डेप्थ में जाएंगे, मतलब प्रोबेबली टू एडवांस फॉर दिस क्लास, फॉर मी ऑल्सो, बट द ट्रू डिवोटी और प्योर डिवोटी थिंक्स द डिस्ट्रेस इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, इट्स अ मर्सी ऑफ गॉड, भगवत प्रसादम, वॉट एवर कम्स इन माई लाइफ इज भगवत प्रसादम, because that gives them more opportunity to become more firm and have faith in Krishna consciousness. कुंती महारानी का हमने एग्जांपल दिया था, एक है बुक है महारानी कुंती की शिक्षा, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, उससे वो बोलती है कि आई वांट कि मेरे ऊपर विपदाएं आती ही रहे हमेशा, क्योंकि जब मेरे ऊपर विपदाएं आती हैं तो आप कृष्ण, आप मेरे साथ रहते हो, आप हमारे सामने देते हो, हमें दर्शन देते हो, और जब हमारे से विपदाएं चली गई तो आप हमें छोड़ के जा रहे हो वापस द्वारका। सो अ ट्रू डिवोटी एक्चुअली थिंक्स व्हाटएवर कम्स इन द लाइफ दैट्स अ मर्सी ऑफ गॉड। हमारा वो लेवल नहीं है, बट अगर हम वो सोचेंगे तो प्रोबब्ली ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। कई लोग होते हैं कि लाइक बहुत प्रॉब्लम, बहुत कोई टफ फेस आया, लोग कहते हैं कि हमारा भी भगवान से डिस्कनेक्ट है, कि भगवान ने हमारे साथ है, अब मैं भगवान से नाराज तो भगवान इज नॉट ऑर्डर सप्लायर ना, अमेजॉन का ऑर्डर सप्लायर नहीं है भगवान। अगर हम भगवान के सोचेंगे भगवान 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा मेरा वीजा लगवा दो, नो, ही विल नॉट डू दैट। अरे उनकी वजह से ही हमें वो 2 किलो लड्डू मिल रहा है, नहीं तो हम भी क्या पता सड़क पे खड़ो के कटोरा लेके खड़े हो, दैट्स पॉसिबल, राइट। तो भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, तो हमें पहले ये सोचना, दैट्स व्हाई वी से निष्काम कर्म, कर्म भी जो लोग फॉलो करते हैं, देयर इज अ निष्काम कर्म, राइट। अ डिवोटी तो कभी सोचता ही नहीं कि मुझे क्या फल मिलेगा, दे आर लाइक आई विल डू ओनली व्हाट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय माय शास्त्र एंड आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, गॉड विल टेक केयर ऑफ मी। एक इसी रिस्पेक्ट में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, ठीक है, वो स्टोरी में आपको अगली बार नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, ठीक, आप लोग मुझे बताएंगे उससे हम क्या सीखेंगे, ठीक है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, देयर आर सो मेनी लेसन इन फ्रॉम जस्ट वन स्टोरी, ठीक, विल डिस्कस दैट नेक्स्ट टाइम, ठीक। बट हाँ, a devotee, the one point if I say, all the devotees, they always take the distress, the difficulties in their life they are getting, that's an opportunity to connect to Krishna more and more, right? Everything, हम कहते हैं ना everything happens for a good, अगर हम उसको बैठ मान के बैठेंगे तो good कैसे होगा, right? So there is always an opportunity, जो गलत भी होता है उससे भी एक हमें ढूंढना है, ठीक, हमें देखना है कि उसमें क्या सही, हम क्या उसको और कर सकते हैं।